नमस्ते। डॉक्टर आनंद कुमार भारतीय पुलिस सेवा के 1981 बैच के अधिकारी थे। मध्य प्रदेश में वह पुलिस कप्तान के रूप में ग्वालियर, रायपुर, भोपाल जैसे महत्वपूर्ण जिलों में पदस्थ रहे। भोपाल से ही अतिरिक्त सचिव गृह विभाग व मुख्यमंत्री के ओएसडी के रूप में सेवाएं दी। प्रतिनिधि युग पर दिल्ली में गृह मंत्रालय में पदस्थ रहे। संयुक्त निदेशक के रूप में कलकत्ता, ईटानगर, गुवाहाटी में कार्य किया। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के कमिश्नर के रूप में सेवाएं दी। स्पेशल डायरेक्टर गृह विभाग के पद से सेवानिवृत्त हुए। भूटान, बांग्लादेश, मालदीव्स, इंग्लैंड, रूस, अमेरिका आदि देशों में सरकारी प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में अनेक बैठकों में भाग लिया। पुलिस सेवा में रहते हुए इनके द्वारा किए गए विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों के लिए भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा इंडियन पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, इंडियन पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस तथा इंडियन पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस से सम्मानित किया गया। वैदिक सनातन संस्कृति के प्रति विशेष प्रतिबद्धता होने के कारण उसके संरक्षण एवं प्रसारण के प्रति सजग रहते हैं। वर्तमान में राष्ट्र निर्माण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहकर आर्य राष्ट्र की स्थापना के लिए प्रयत्नशील है। So, Dr. Anand Kumar, please, the floor is all yours. Thank you, Brahmadevji. Distinguished guests, eminent Vedic scholars, the convener of this wonderful program, Professor Ravi Prakash ji, Maharshi Dayanand Saraswati Chair, MD University Rohtak, Dr. Vinay Vidyalankar ji, my friend Anand Kumar Sharma ji, ladies and gentlemen. At the outset, I would like to express my gratitude and thanks to Professor Ravi Prakash for giving me an opportunity to be part of this unique program and enabling me to interact with an acclaimed audience who are located in far-off places and in different continents. I would be speaking on the relevance of and application of 5th chapter of Satyarth Prakash in modern context. Dr. Vinay Vidyalankar has made my task very easy because he has already explained the various ticklish issues. As you know, Satyarth Prakash is the best book to understand Vedic Dharma and Vedic culture. All relevant issues have been explained with full clarity, with proper arguments on the basis of Vedic scriptures. You also find a comparative study of all religions known up to that time. If you study it carefully, your all doubts about Vedic Dharma and Vedic culture will be cleared. Certainly,
in the last 5,000 years, that is my opinion, there is no other book which can compete with Satyaprakasha in many aspects. Gentlemen, Vedic system or society is based on 4 varnas and 4 asamas or 4 stages of life. The first asam is brahmacharya, student life with emphasis on celibacy. The second asam is grihastha, married life. The third asam is vanprastha or recluse, go to a forest and practice austerities. And the fourth is sannyas or renunciant. While explaining these 4 asamas, Maharishi Dayan says, Brahmacharya ashram is meant for the acquisition of education, discipline, and bodily strength. The Grihastha ashram for the accomplishment of worldly affairs. The Vanprastha ashram for the promotion of thinking, concentration, and knowledge, and for the practice of austerities. And sannyas ashram is meant for the preaching of the Vedas and other scriptures, for the appreciation of virtue and condemnation of vice, for the propagation of truth, and for the removal of doubts. Sannyasin should employ themselves in the propagation of promotion of the word by preaching the truth, by removing doubts, by teaching the Vedas, and by spreading Vedic religion. That is the objective of 4 asamas in words of Swami Dayananda Saraswati. A question arises, what is the relevance of 4 asamas or 4 stages of man's life in modern context? Gentlemen, certain periodic changes take place in our body. These changes are at physical, mental, emotional, intellect, and temperament levels. Up to 25 years, we observe very fast growth of our body and mind. However, from 25 to 50 years, the growth after reaching the highest point more or less remains stagnated. With experience and maturity obtained during the last 25 years, now we find entirely a new or different person. Similar changes are noticed after 50 to 75 years and onwards. So there is a cycle or circle of 25 years. And each circle is harbinger of new changes in our body, mind, intellect, and thought process. So there is a need to reorient or readjust ourselves in consonance with the periodic changes so that our life could be more happy, healthy, prosperous, and purposeful along with true knowledge. This requirement of reorientation or readjustment after each circle of 25 years is the genesis of 4 asamas. Had there been no change in our body, no need would have been there
for different ashramas. The 5th chapter of Satyarth Prakash mainly deals with 2 ashramas, Vanprastha and Sannyasa. In respect of Vanprastha or recluse, a Dvija is supposed to proceed to the forest after completing the family life, when the hair of his head turns grey and his skin becomes loose and a son is born to his son. But why one should go to the forest? Because in Grihastha, Dvij remains busy in earning money, taking care of children and other family members, ensuring family obligations in respect of relatives, guests, and friends. Hence, he is not able to concentrate on his studies, yogic practices, and control of senses and worldly desires. This results in a weakening of his physical and mental strength. To replenish his depleted energy, he needs pollution-free and distraction-free environment which is available in the forest only. Gentlemen, the second advantage of Vanprastha is that it reduces the likely conflict between new generation and old generation. This system also helps in maintaining affection among all family members. The third advantage or relevance of Vanprastha is that well-experienced, educated, good-mannered human resource becomes available for the development of the society. Their services could be utilized for educating children, inculcating good habits, and imparting health-related awareness among the children. They will work on voluntary basis, so there will be no extra financial burden on the government. These Vanprasthis will be able to do wonders for guiding new generation on the righteous path. Another advantage of Vanprastha is that it helps slowing down the aging process and enhancement of longevity. There's one another thing. This is the journey of expansion of oneself to many, as we read in Upanishad about Brahma, Ekoham Bahusyama. The similar is with the person who has come to this world. He is alone. But when he comes, he is joined by his parents, then wife, then children. So expansion is going on. And then he becomes Vanprastha. Then again, from family, he is working for society. Then sannyas. Then from society or nation to humanity. So this is the journey of expansion of oneself to the many. While explaining the process of Vanprastha, Maharshi Dayan says that after Grihastha or Grihasam, one should leave the house, renounce the food and dress of the people, leave the wife to the care of the sons, and then proceed to the forest, or he can take wife
with him. How a Vanprasthi should conduct himself? Let us listen to Manu. Already, Dr. Vinay Vidyalankar has told about this. I am repeating this. स्वाध्याये नित्य युक्तः स्यात्, दान्तो मैत्रः समाहितः, दाता नित्यमना दाता, सर्वभूतानुकंपकः. He should be regular in studies of Vedic scriptures. Dantah, self-controlled. Maitrah, friend of all. Samahita, controller of senses. Data, giver of knowledge or money. But anadata, he should not accept anything from others except alms. And sarva bhutanukampakah, he should be kind to all. So that is the process or procedure or conduct described by Manu for Vanprasthi. Again, aprayatnah sukhartheshu brahmachari dharashayah Sharnesu amamasthaiva vrikshamula niketanah. A Vanprasth should not seek any physical comforts, should be chaste, should not have conjugal relations with his wife, should sleep on ground, should no infatuation for his belongings or asakti, and should dwell under a tree. Similarly, tapah shraddhe ye upavasantyaranye shanta vidvanso bhakchacharyam charantah. The peaceful man of learning should practice austerities and righteousness. They should live in forests and be dependent on alms for food. So that is the what we read in Manusmriti. Some of them have been explained here. Gentlemen, since ancient times, Vanprastha has been a life part of Indian culture. Kalidas, in his Raghuvansh Mahakavya, has described Vanprastha as a family tradition of Ikshvaku dynasty. It is said that in the old age, King Dilip, along with his wife, had taken shelter under trees in the ashrama of Muni Vasishtha, while renouncing the throne in favor of his son Raghu. अथ स विषय व्यावृत्तात्मा यथा विधि सूनवे नृपति ककुदम दत्वा यूने सितात तप वारणम मुनिवर तरुच्छायाम देव्या तया से सुश्रिये. That King Dilip with his wife had taken shelter under the trees in Vasisthashram. Galit Vaisam Ikshvakunam idam hi kulabratam. That this is the family tradition that they go to Vanprastha and go to forest and do the Vanprastha. Gentlemen, Vanprastha is a preparatory ashrama, like Brahmacharya. Before joining Grihastha, it is necessary to make himself ready to carry on the Grihastha obligation. Similarly, before joining Sannyasa ashrama, one needs to prepare oneself. Now, we will take up
or we talk about applicability of Vanprastha under the modern context. Presently, there are no forests. At some places, if forests are there, they are under government control. If you stay there, after encroaching the land, you might face prosecution from government agencies. There are some areas where people are hostile. So what option available with us under these circumstances? In my opinion, one option is that the concerned person, if he has resources, can build a separate house from his children and try to live a life of Vanprastha. That is one aspect under the present circumstances. The second option is that every Arya Samaj Mandir, or at least big Arya Samaj temples, should have a provision for 2-3 accommodations where Vanprastha or Sannyasin could stay for short duration or longer periods. The third and the best option is to build Vanprasthasrama and Sannyasasramas on the pattern of Vanprasthasram at Jwalapur, Haridwar, which was established by great visionary late Mahatma Narayan Swamiji. Gentlemen, after completing the third stage of his life, after living as a Vanprastha from the 50th to 75th year, he should enter into the fourth stage as Sannyasin, renouncing all his connections. This is the last stage of life, when one starts feeling the fear of death. Impact of this fear is always unidentical on different people. Some may become totally disappointed. Now, what to do? I am going to die in near future. Some may develop signs of depression. And out of fear of losing everything soon, some may indulge in use of intoxicants, food, and more sex that could result in their early death or serious diseases. As per the Vedic tradition, the best way to overcome the fear of death is enter into sannyasasrama and work for development of the entire humanity. As Upanishad Rishi says, akamo dhiro amrita hai swayambhu rasena tripto na kutaschanona tameva vidwan na vibhaya mrityo atmanam dhiram ajaram yuvanam. When someone realizes God or Ishwar, the fear of death disappears. There is no fear of death, na vibhaya mrityu. When you realize that God is there, when you realize, yes, Ishwar is there, the first condition for taking sannyas is having real vairagya, non-attachment. The day one becomes vairagi or non-attached to the worldly desires, he is authorized to enter into sannyas either from grihastha or vanprastha. One can also embrace sannyasa ashram immediately after the brahmacharya, leaping over the two ashrama.
if he is quite free from all carnal desires, has full control over himself, and feels a very strong desire to devote his life to public good. So then one can go, or one can embrace sannyas ashrama directly from brahmacharya. Gentlemen, second condition for sannyas ashram. To take sannyas is, the second condition is to take sannyas is shuddha sattvaha, that their inner self should be pure, free from three desires, that is lokeshna, vitteshna and putreshna, should not be attached to popularity, money and sex. And that is why Manu says, Artha kameshwa saktanam dharma jnanam vidhiyate. Those who are not attached to money and sex, they can only learn the secret of dharma. So this is very necessary, that three desires we need to abandon. The third condition for sannyas ashram is that the person should be well versed in Vedic Vijnana. Vedant Vijnana Sunishchitartha. He should know Vedas and Vijnan, that God. While talking about significance of sannyas ashram, Maharishi Dayananda says that as the body needs the head, similarly, other ashramas need sannyasa. Without it, it is not possible to foster knowledge and piety. The other ashramas have very little leisure left after education, family affairs, and other services. It is very difficult for other ashramas to help being partial. They are not as free as a sannyasin to devote himself entirely to public work. The opportunities which sannyasin has to foster the learning and promote science are not open to other ashramas. Even sannyasin, passing through grihastha and vanprastha stages, cannot be as useful to the world in promoting the causes of truth as a sannyasin coming direct from brahmacharya ashram. Gentlemen, while talking on the issue of who is authorized to become sannyasin, Maharishi Dayananda says only a Brahmana is authorized. Any man who is thoroughly learned, righteous, and philanthropic is a Brahman, from whatever class he might have come. There was a question that teaching and preaching can be done by Brahmanas. Then what is the need of sannyasin? Responding to this question, Maharishi Dayananda says that let teaching of truth be imparted by all classes. But family men can neither afford so much time nor impartiality as sannyasin can. Sannyasin have more time to travel from place to place than householder, Brahman. If sometimes Brahmanas deviate from Vedic path, sannyasin can put a check on them. So that is why sannyas is necessary
even if Brahmins and others, they can do some kind of preaching and teaching, then also there is a requirement of sannyasas. Gentlemen, there is a widespread perception among sannyasin that they do not have any obligation to perform any duties or any work. Countering this, Maharshi says, when they accept food, dress, etc. from Grihastha and give them nothing in return, then are they not committing the great sin of ingratitude? Just as eyes and ears are useless if the work of seeing and hearing is not taken from them, similarly, if sannyasin do not devote themselves to the study and propagation of Vedic teaching, they are a useless burden on the world. Interestingly, in the first edition of Satyarth Prakash, Maharshi Dayananda had proposed that such sannyasin who do not perform their duties of preaching and teaching of Vedas because of their ignorance and not have real vairagya, the government should use them for agricultural work. That is the suggestion from Maharshi Dayananda in first edition of Satyarth Prakash, कि उनसे हल जितवाया जाए. At least they'll be useful. So they should work in the fields. Similarly, translating a mantra that apatyam paripanthinam mushivanam huraschitam. In this mantra, Maharshi Dayananda has suggested that those sadhus who accumulate money from people by promising false assurances, Maharshi says in Ved Bhashya of this mantra, they should be prosecuted for theft. Such sannyasin or such sadhus. While describing special duties of sannyasin on the basis of Manu, Maharshi Dayananda has explained many. Some of the salient points are such: sannyasin should invariably speak the truth. His deed should be purified by the useful deliberations, thoughtful deliberations. If during conversation anybody shows anger or speaks ill of him, then he should not be angry in return. He should never use the tongue in false speaking. Whether the world condemns him or eulogizes him, he should never leave the right path. He should be impartial to all. He should remember that external symbols, stick, bowl, or yellow robes, are not guarantee of a virtuous life. The chief duty of a sannyasin is to improve the condition of mankind by preaching of truth and gift of education. So these are the some of the. A sannyasin should get rid of defects of his soul, mind and senses by means of pranayama, of sins by dharana, of society by pratyahara, by atheistic tendencies by dhyana. Set in self and God, unrelated to other things,
avoiding flesh and liquor, etc. Seeking pleasure within, a sannyasin should travel in the world with the object of raising the level of learning and conduct. These are some of the duties described by Maharishi Dayananda Saraswati. There are others, but salient points I have enumerated. In modern times, I am talking about that Maharishi Dayananda has written that sannyasin should avoiding flesh and liquor. How important is this? In modern times, most of the educated youth in India and abroad are developing non-veg food habits and indulging in liquor consumption. If you visit US Health Department website, US Health Department website, you will find a detailed description about the harm or diseases caused by the liquor. That is I found best information available about harmful impacts of liquor. About non-veg, in November 2017, 15,364 world scientists, again I repeat, in November 2017, 15,364 world scientists signed a letter and issued a warning to the world leaders and humanity, calling for, among other things, drastically diminishing our per capita consumption of meat for resolving the problem of pollution and climate change. That is one aspect. You can understand that the wisdom of our rishis. Again, on August 8, 2019, the IPCC, the Intergovernmental Panel on Climate Change, released a summary of 2019 report, which claimed, again very significant, that a shift towards plant-based diets, I repeat my words, a shift towards plant-based diets, that vegetarianism, would help to mitigate climate change. According to a 2018 study in the journal Nature, a significant reduction in meat consumption will be essential to mitigate the climate change that has been mentioned. So, gentlemen, now scientists, they may be Christians, they may be Muslims, they may be whatever of background, but on one issue, they are one, that we need to abandon meat consumption if we want to save this world from climate change. And meat is the most pollutant for this world. So now, gentlemen, scientists are supporting the vegetarianism and opposing meat consumption and favoring what Maharishi Dayananda and Manu had prescribed or said. Gentlemen, whatever Maharishi Dayananda explained in 5th chapter is very much relevant in modern context. And whatever
crisis humanity is facing today, these crises or conflict can be resolved amicably if we can follow the Vedic path. Thank you very much for listening my speech. Thank you. धन्यवाद डॉक्टर आनंद जी। बहुत ही सुंदर आपने जो सत्यार्थ प्रकाश की जो 5वां समुल्लास है उसकी प्रासंगिकता और उपादेयता आधुनिक युग में कैसे हो सकती है उस पर बहुत ही अच्छा प्रकाश डाला। सबसे महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि ये जो आश्रम व्यवस्था है इसका संबंध जो शरीर का जो बायोलॉजिकल स्टेजेस हैं बॉडी की उससे भी है। तो यह एक वैज्ञानिक व्यवस्था है मेडिकल साइंस की दृष्टि से भी। और आपने बताया कि जब वानप्रस्थ में जब व्यक्ति प्रवेश करता है तो उसके अत्यंत काफी फायदे मिलते हैं। एक तो क्या है कि व्यक्ति जब घर से दूर रहता है तो एक कॉन्फ्लिक्ट रिडक्शन होता है, थोड़ा सा जनरेशन गैप है, तो जनरेशन गैप के कारण जो झगड़े होते हैं या कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं वो कम हो जाते हैं। दूसरा, जो व्यक्ति है अपने परिवार से हट करके उसका एक विस्तार होता है, जैसे कि आपने बहुत सुंदर कोट किया, एको अहम बहुश्याम। तो जो व्यक्ति एकता से, एक की इंडिविजुअलिटी से निकल के यूनिवर्सलिटी की तरफ बढ़ता है, क्योंकि जो आत्मा है, जो ब्रह्म का साक्षात्कार है, वो भी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सोल है। इंडिविजुएशन से, इंडिविजुअलिटी से, व्यष्टि से समष्टि की ओर कदम है। तो यह भी उसी प्रक्रिया का एक परिणाम है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एक पूरी व्यवस्थित एक्शन प्लान है कैसे व्यक्ति मोक्ष की तरफ आगे बढ़ सकता है। तो जब व्यक्ति इंडिविजुअलिटी से यूनिवर्सलाइज होने की कोशिश करता है तो यह उसका पहला चरण है अपने ईश्वर साक्षात के लिए या ब्रह्म रियलाइजेशन के लिए या मोक्ष के लिए, क्योंकि मोक्ष का अर्थ छुटकारा भी प्राप्त करना है। तो जो अपने जो भौतिक संबंध हैं उनसे व्यक्ति जितना वैराग्य प्राप्त करके छुटकारा प्राप्त करेगा तो उसका इस इह लोक में मोक्ष हो रहा है, फिर पारलौकिक मोक्ष की तरफ वो आगे बढ़ सकता है। तो ये आपने बहुत अच्छा बताया। और जब व्यक्ति जो भिक्षा मांगता है, भिक्षा मांग करके गुजारा करता है, उसका एक और बड़ा महत्वपूर्ण है कि उसका जो अहम भाव, उसका जो अहम भाव है वो समाप्त हो जाता है। क्योंकि जब व्यक्ति, जब तक अहम भाव है, जब तक इंडिविजुअलिटी है, कभी उसका मोक्ष नहीं हो सकता है। जब तक अहम का संस्कार रहता है व्यक्ति मोक्ष की तरफ नहीं जा सकता है, क्योंकि अहम तो केवल ईश्वर का गुण है, किसी व्यक्ति का गुण नहीं हो सकता है। तो भिक्षा मांगने से भी जो अपने शरीर, जो अपने अंदर एक कोई अहम भावना है उसकी भी समाप्ति होती है, जो उसको आगे यूनिवर्सलाइजेशन की ओर आगे बढ़ाती है। दूसरा, आपने ये बताया वानप्रस्थ आश्रम के बाद जो संन्यास आश्रम है, संन्यास में किस प्रकार से जो परोपकार करना है, समाज का कल्याण करना है। केवल देखिए, ज्ञान प्राप्ति हम मानते हैं कि एक अपना व्यक्तिगत धर्म है, एज एन इंडिविजुअल हम ज्ञान तो प्राप्त करेंगे, परंतु एज एन इंडिविजुअल, क्योंकि एक हम सोसाइटी का भाग हैं, एक समाज का भाग हैं, तो हमारा समाज के प्रति दायित्व बनता है कि हम समाज, जो हमने अकुमुलेट किया है, जो ग्रहण किया है, जो संस्कार ग्रहण किए हैं अपने ब्रह्मचर्य आश्रम से, जो एक्सपीरियंस हमने गृहस्थ में लिया है, जो परिपक्वता हमने वानप्रस्थ आश्रम में प्राप्त की है, उसका हम प्रचार करें, उसके माध्यम से हम समाज का मार्गदर्शन भी करें। और वो एक निष्काम भाव से, जो भगवद गीता में निष्काम भाव का कंसेप्ट दिया है, उसका सबसे बड़ा प्रयोग अगर कोई मैं करने वाला देखता हूं तो वो महर्षि दयानंद है। उन्होंने निष्काम भाव से समाज की सेवा की। लोगों ने पत्थर मारे, ईंट मारी, उनको गालियां बकी, परंतु उनको ये था कि मुझे समाज को सत्य का ज्ञान देना है। तो उन सब चीजों से विचलित नहीं हुए और सब व्यक्तियों के प्रति स्नेह का भाव, जैसे एक बहुत बड़ा पुरुष, एक बहुत बड़ा व्यक्ति छोटे बच्चों के प्रति प्यार रखता है, बच्चे उसको तंग करते हैं, उसको पीटते हैं, फिर भी वो उनसे दुखी नहीं होता, वैसी अवस्था महर्षि दयानंद की थी। और उन्होंने पूरे यही एक सन्यासी के लिए भी उन्होंने बताया, और सन्यासी और वानप्रस्थी के लक्षण भी बताए हैं।
कोई पोशाक से सन्यासी और वानप्रस्थी नहीं होता, परंतु यदि उन लक्षणों वाला कोई गृहस्थ भी है तो उसको हम वानप्रस्थ ही कहेंगे। यदि उन आचरणों से युक्त कोई गृहस्थ में भी बैठा इस समय व्यक्ति काम कर रहा है तो वो सन्यासी के ही तुल्य हो जाएगा। और सबसे अच्छी एक व्यवस्था विद्वान वक्ता ने बताई कि ऐसी आज की परिस्थिति में, देखिए ये इसकी प्रासंगिकता तो है ही, आज की परिस्थिति में एक वानप्रस्थी कैसे बने। मान लीजिए व्यक्ति साधना करे, वानप्रस्थ करे, तो या तो वो अकेला घर बनाए, ऐसे अकेले घर बनाने की पूरी व्यवस्था तो यूरोप में और अमेरिका में ही सब बच्चे उनको छोड़ देते हैं, वो अलग रहते हैं, बच्चे अलग रहते हैं। परंतु और दूसरी एक व्यवस्था सुझाई कि आश्रम भी बनाए जाएं। देखिए उस समय सब लोग आश्रमों में चले जाते थे, वहां पर आश्रम व्यवस्था थी, बड़े ऋषियों के आश्रम थे, तपस्वियों के आश्रम थे। यदि ऐसे आश्रम हमारे समीपस्थ जंगलों में बाहर बने विशिष्ट स्थानों पर, तो ये एक व्यवस्था बहुत ही अच्छा आपने ये बताया कि उससे जो है वानप्रस्थ जो सिस्टम है मजबूत होगा। और बड़े आश्चर्य की बात है कि जो जब टॉलस्टॉय ने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा तो उन्होंने भी अपने मृत्यु के अंतिम दिनों में ये कहा था कि मैं अगर मेरा जीवन ज्यादा होता तो मैं भी वानप्रस्थी बनता। उनको ये व्यवस्था लियो टॉलस्टॉय को भी बहुत पसंद आई थी। अगर टॉलस्टॉय लंबे समय तक जीवित रहते तो संभवतः वो जो महर्षि दयानंद जो ईस्ट में काम किया वो पश्चिम में वही आंदोलन वो भी चलाते। तो ये एक जो सार्वकालिक व्यवस्था है, ईश्वर प्रदत्त व्यवस्था है, और इस व्यवस्था के अधीन व्यक्ति अगर आगे बढ़ता है तो वह कार्य कर सकता है। और एक शुद्ध सत्व की बात भी हमारे पूर्व वक्ता ने भी कहा, आपने भी कहा कि एक शुद्ध सत्व जो है वो संन्यास के लिए होना आवश्यक है। शुद्ध जो सत्व है, जो प्योरिटी ऑफ माइंड है, जब तक मन में बाह्य विषयों के संस्कार हैं वो मन शुद्ध नहीं होता है। और जब मन के अंदर बाह्य जगत के संस्कार समाप्त हो जाते हैं तो वो जो मन है वो शुद्ध सत्व कहलाता है। और ऐसा सन्यासी ही जिसका शुद्ध सत्व है वही सन्यासी कहलाने का भी अधिकारी है। और वही व्यक्ति समाज के कल्याण की भावना से, परोपकार की भावना से कार्य करने में समर्थ होता है, सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता है। तो और आपने एक बहुत अच्छी चर्चा बताई शराब और मांस भक्षण पे, जो महर्षि दयानंद और जो हमारे शास्त्रों ने हजारों वर्षों की परंपरा तक जो हम कहते रहे, रिपीट करते रहे, और महर्षि दयानंद ने 19वीं शताब्दी में जिन बातों को कहा, सामान्य व्यक्ति की हम बात नहीं करते, हम राजनीतिज्ञों की बात नहीं करते, परंतु जो वैज्ञानिक हैं वो इस आशय पर, उनकी शोध वहां पर पहुंच गई है कि ये जो मांस भक्षण है केवल व्यक्ति के निजी संस्कारों को भी पाश्विक नहीं बनाता है, परंतु सृष्टि के अंदर भी जो प्रदूषण व्यवस्था है, जो प्रदूषण है उसको फैला रहा है। और यदि ये जो ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही है, जो प्रदूषण बढ़ रहा है, यदि यही ऐसे ही बढ़ता रहा तो इससे व्यक्ति का जो जीवन है, जो सभी प्राणियों का इस पृथ्वी पर जो अस्तित्व है वह भी खतरे में पड़ जाएगा। तो इस ढंग से आपने बहुत वैज्ञानिक ढंग से, और हमारे पूर्व वक्ता ने भी एक विस्तृत ढंग से जो पंचम समुल्लास था सत्यार्थ प्रकाश का, उसकी एक वृहद व्याख्या की। और आपने उसको बिल्कुल उसकी एप्लीकेशन दिखाते हुए, उसकी प्रासंगिकता को दिखाते हुए ये सिद्ध किया। मैंने किसी व्यक्ति से बात की, कोई एक प्रोफेसर थे JNU के, मैंने उनको कहा कि 5वें समुल्लास पर आप बोल सकते हैं। उनका एक बड़ा विचित्र मेरे सामने प्रश्न आया। उन्होंने कहा कि देखिए कोई सन्यास की व्यवस्था कोई वेदों में तो लिखी नहीं है, इस पर क्या बोलेंगे। मतलब लोगों को ये समझ में नहीं आता कि ये एक जीवन की एक डिसिप्लिन है, जीवन का एक अनुशासन है, किस प्रकार से व्यक्ति इन अवस्थाओं से चलता हुआ, इन स्टेजेस से अंडरगोइंग दीज स्टेजेस, हाउ कैन ही अटेन डिविनिटी, हाउ कैन ही अपलिफ्ट हिमसेल्फ। क्योंकि मनुष्य का जो जीवन है वह केवल मनुष्यत्व के लिए नहीं है, उसका अंतिम लक्ष्य तो ब्रह्मत्व की प्राप्ति है। और वह तभी हो सकती है जब हम इन सब
तरीके से हम इसी दिशा से आगे बढ़ें। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, एक विजन स्टेटमेंट है ब्रह्म का, ईश्वर का, और ये एक्शन प्लान है महर्षि दयानंद का। यदि आप इस एक्शन प्लान को अपनाते हैं तो आपके जो सीधे द्वार हैं देवलोक के लिए खुले हुए हैं। अन्यथा ये जो मृत्यु लोक है, इसमें आप भ्रमण करने के लिए फ्री है, क्योंकि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र, आप जो चाहे कर सकते हैं। परंतु ये सब उपदेश उन लोगों के लिए आवश्यक है, उनके लिए मैंडेटरी बनता है जो कि अपने आप का विकास करना चाहता है, अपने आप को अपलिफ्ट करना चाहता है, अपनी उन्नति करना चाहता, आध्यात्मिक उन्नति और भौतिक उन्नति। जैसा कि वैशेषिक में कहा, यदो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि, जिसमें सामाजिक कल्याण भी हो और निश्रेयस की सिद्धि, तो ये उसकी एक सीढ़ी महर्षि दयानंद ने हमें दी है। तो इसी के साथ मैं अपने दोनों विशिष्ट वक्ताओं का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। वो मेरे आग्रह पर आए और इस जो पूरा ये जो कार्यशाला है और हम सबकी आपने शोभा बढ़ाई। मैं अंततः फिर अपने पूर्व वक्ता प्रोफेसर विनय कुमार जी का धन्यवाद करता हूं और अपने जो विशिष्ट वक्ता डॉक्टर आनंद कुमार जी हैं, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं और आप सब लोगों का भी मैं धन्यवाद करता हूं। आई थैंक ऑल who have gathered here just to make this program a success, and in the audience we have all very intellectual persons who have lot of knowledge, and the thing is that they are appreciating these lectures. This shows that our workshop is going in the right direction and some message is going out from this workshop, and this appreciation is going to encourage me to launch further programs, this type of programs, with the help of all you scholars. So again, I thank you all, and I thank our learned speakers of today.